Some update on the COVID-19 developments. Principal Scientific Advisor to Government of India, Professor K. Vijay Raghavan has said about a total of 30 groups in the country, big industry to individual academics, are involved in developing corona vaccines. He said around 20 research are keeping a good pace. Over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they are also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines. And Principal Scientific Advisor explained the working mechanism of vaccine and the process of manufacturing it as well. Instead of working on one vaccine and seeing whether it works over a 10-year period and investing on that, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. And Professor Raghavan also stressed on the key steps that must be taken in this situation. एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए, दूसरी सरफेसेस को साफ करनी चाहिए, तीसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए. ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए. चौथे और पांचवे ट्रैकिंग और टेस्टिंग है. ये पांच हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए. Addressing the media at the National Media Centre in the capital, Member Health of Niti Aayog, Dr. V.K. Paul said COVID-19 pandemic can be won over only by science and technology. कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी. वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके. दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा. Dr. Paul also said that India's pharma industry is famous across the world. It's known as pharmacy of the world. Medicines and vaccines manufactured in India have great global demand. कि फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. हमारी दवाइयां से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयां सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं.